पार्लियामेंट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है. इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट सो आगे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको उनके आंसर्स आते होंगे. एंड इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट देन डोंट वरी, आफ्टर द डिस्कशन all things are going to be clear. So the statement is, a session of the parliament start on the date of summon and it ends on the date of prorogue. So the questions are, what is this session of the parliament? What's the meaning of the term summon, prorogue? एक साल में पार्लियामेंट के कितने सेशंस होते हैं और एक साल में पार्लियामेंट के कितने सेशंस होते हैं? क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने मैक्सिमम या मिनिमम नंबर ऑफ डेज हमें प्रोवाइड किए हैं फॉर द पार्लियामेंट टू मीट इन अ ईयर? If you know the answers, then let me know in the comment section. And if you don't understand, then wait. After the discussion, all questions are going to be clear. So let's start our discussion. So our constitution does not provide any maximum or minimum number of days for the parliament to meet in a year. Means एक साल में पार्लियामेंट के कितने नंबर ऑफ सेशंस होने चाहिए, ऐसा कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ प्रोवाइड नहीं किया है. एज अ कन्वेंशन पार्लियामेंट एक साल में 3 सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के. Budget session, that is end of January to April session. This is the longest session of the year. Monsoon session, that is July-August session. Winter session, that is November-December session. This is the shortest session of the year. अब ये session क्या होता है? Session is a duration, is a time period for the parliament to perform its business, to perform its function. Means during this session, parliament perform its business. And हमारी स्टेटमेंट क्या थी? अ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट स्टार्ट ऑन द डेट ऑफ समन एंड इट एंड्स व्हेन इट इज प्रोरूग्ड. सो देखिए हमने सेशन समझ लिया. जिस दिन हमारा सेशन स्टार्ट होता है दैट डे इज द डेट ऑफ समन. एंड हु समन द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट? प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स समन द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट. एंड during this session, Parliament perform its business, perform its function. And the day when the business is complete, the work is over. Then the day come to end the session. And that day is the date of prorogue. And who prorogue the session of the Parliament? President on the advice of Council of Minister prorogue the session of the Parliament. So I think now you understand this statement. A session of the Parliament start on the date of summon and it ends when it is prorogued. Now we are going to discuss the joint sitting of both the house of the parliament, that is Lok Sabha and Rajya Sabha. If a bill is passed by either of the house of the parliament and send the bill to the second house, so second house can say yes to the bill and send the bill to the president for assent. The second house can say no to the bill, but it doesn't mean that the bill life is ended. It can be done only by the president. The second house can send back the bill to the first house with some amendments. अब first house उन amendments के साथ agree भी हो सकता है, disagree भी हो सकता है and send the bill to the second house. And second house can say yes to the bill or no to the bill. If it says yes to the bill, then the bill is sent to the president for assent. If the second house do not take any action on that bill for 6 months, then this situation create a deadlock condition between two houses. And to resolve the deadlock situation, President send a notice to summon a joint sitting of both the house of the parliament. And as per Article 108, once the notice of that joint sitting is sent by the President, either of the house of the parliament means Lok Sabha और Rajya Sabha, कोई भी हाउस उस बिल पर कोई डिस्कशन कोई प्रोसीडिंग नहीं करेगा. द नेक्स्ट डिस्कशन ऑन दैट बिल इज प्रोसीड ओवर ओनली ऑन द डे ऑफ जॉइंट सिटिंग. एज पर आर्टिकल 118, प्रेसिडेंट कैन फ्रेम रूल्स टू रेगुलेट दैट जॉइंट सिटिंग, एज पर विच प्रेसिडेंट हैज फ्रेम्ड हाउस ऑफ पार्लियामेंट जॉइंट सिटिंग एंड कम्युनिकेशन रूल्स, एज पर विच द quorum of the joint sitting is 1/10 of total strength of the house, that is Lok Sabha and Rajya Sabha. The rules of the Lok Sabha will apply on the joint sitting and the presiding officer of this joint sitting is a speaker, and if speaker is absent then deputy speaker, and if deputy speaker is absent then deputy chairman, and if deputy chairman is absent then the house, both Lok Sabha and Rajya Sabha sitting together shall determine who will preside over. As per the constitution, the joint sitting is applicable for ordinary bills,
financial bill, but the joint sitting is not applicable for money bills, constitution amendment bills. And on the day of the joint sitting, the bill is passed by a simple majority. And on the day of the joint sitting, only few amendments can be introduced. जिन पर दोनों हाउसेस, जिन पॉइंट्स पर दोनों हाउसेस डिसएग्री हैं, जिस वजह से उस बिल को पास होने में डिले हो रहा है, वो जो अमेंडमेंट्स हैं वो एडमिसिबल हैं या नहीं है, द फाइनल डिसीजन इज ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर. एंड टू गेट मच मोर इन्फॉर्मेशन कीप वॉचिंग यूपीएससी स्टेशन विद शिवानी वशिष्ठ.